ऑलमोस्ट 90% ऑफ एप्लीकेशन जो भी आपको लिंक्डइन पे नौकरी पे दिखते हैं वो आर डेड एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू राउंड उनको अगर कोई सस्ते में कोई बंदा मिल जाता है दे डोंट इवन केयर टू कॉल यू, दे जस्ट डायरेक्टली गोस्ट यू। इनको डेवलपर रोल पे आपको टेस्टिंग आनी चाहिए, आपको डेवलपमेंट आना चाहिए, आपको डेवऑप्स, एआई, एलएलएम, मशीन लर्निंग, फ्रंट एंड, बैक एंड, और जब पैसे देने की बात आती है तो हाथ खड़े कर देते हैं। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑफ करियर विद ओमकार, एंड इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट माय ऑनेस्ट एक्सपीरियंस as a job seeker in the last 2 months as I was unemployed with even having 5 years of experience. I struggled a lot. So last working day of my previous company was 10th of February to this 9th April. I was unemployed, and whatever experience I had, I'll just share openly with all of you guys. So few of you people might already know me, what I do and etc. बट फॉर दोज ऑफ यू आर न्यू ऑन द चैनल, तो मैं डेटा इंजीनियर हूँ और मुझे अराउंड 5 years का एक्सपीरियंस है। ओके, सो इन प्रीवियस कंपनी आई वॉज रिजाइंड ऑन 10th of November और मुझे 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना था। सो माई लास्ट वर्किंग डेट वॉज कमिंग अराउंड 10th of February. सो आई हैड एन ऑफर, आई हैड टू रिवोक दैट ऑफर बिकॉज आई नीड टू टेक केयर ऑफ माई पर्सनल थिंग्स। तो 10th of February के बाद 1-2 वीक चले गए और ऑल द थिंग्स गॉट सॉर्टेड आउट एंड आई अगेन स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर द जॉब. So in those period, I have observed that very worst part of IT companies and what they are actually doing. And majority of times I have experienced similar things with the different companies. So let's talk about our first thing, that is a notice period. So notice period was a deal breaker for a HR. इनको candidates भी चाहिए जो immediately join कर सकते हैं और वो नहीं चाहिए जो laid off है। तो अभी कैंडिडेट का नोटिस पीरियड ज्यादा है तो उनके साइड से रिस्क है कि आई विल लुक फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज. सो दिस वाज माय एक्सपीरियंस विद एचआर, मेजॉरिटी ऑफ एचआर बिटवीन द नोटिस पीरियड, सर्विंग नोटिस पीरियड एंड बिफोर इवन रिजाइनिंग फ्रॉम अ जॉब. तो they wanted someone who can join immediately, like 1 week, less than 1 week or less than 15 days to be very specific. Also my friend got laid off from his company, तो ही वॉज ऑल्सो इन सेम बोट. तो उसको भी जॉब ऑफर्स, मतलब इंटरव्यू ही नहीं आ रहे, तो जॉब ऑफर्स के दूर की बात है, इंटरव्यू से नहीं है, एचआर भेजना ही नहीं दे रहा क्योंकि वो लेड ऑफ है. मेरे केस में तो मैं इमीडिएट ज्वाइनर हूँ, आई हैव रिजाइन माई सेल्फ. इट्स नॉट लाइक आई हैव गॉट लेड ऑफ फ्रॉम माई कंपनी. तो कंपनी सुनना ही नहीं चाहती है द पीओवी फ्रॉम यू. एंड आई एम नॉट सेइंग हियर कि जस्ट मेरे पे विश्वास करो. आई एम ऑल ओपन फॉर योर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन. यू कैन गो एंड आस्क, do everything that you can do. I have experience later, I have pay slips, I have PF, right? So that was a really bad experience considering the notice period. The second major thing that I've experienced is about experience paradox. They want a fresher with a 2 years of experience in some domains. Now, how they'll get a 2 years of experience if it's a fresher, a college graduate of BTech or BSCA? How could they have a full-time experience? I mean, that's not what they should look for. They should look for the internship experience or the project experience. That doesn't make sense. Now, about experienced people, as they have experience, they would at least need in between 30% to 50% of hike if they're switching companies, right? You cannot say that your current salary is out of budget already after taking 3 rounds of interviews. तो मैं हमको इतना सैलरी नहीं दे सकते. सो व्हाट वेर यू डूइंग अर्लियर बिफोर टेकिंग माई इंटरव्यूज? मैंने ऑलरेडी बोल लिया कि मेरा करंट स्टेटस इतना है XYZ, सो आई एक्सपेक्ट XYZ प्लस 30%. तो तुम लास्ट में क्यों बोल रहे हो कि XYZ तो मेरे ऑलरेडी आउट ऑफ बजट है? सो आर यू किडिंग मी? एंड अनदर थिंग इज, इनको डेवलपर रोल पे आपको टेस्टिंग आनी चाहिए, आपको डेवलपमेंट आना चाहिए, आपको डेवऑप्स, एआई, LLM, मशीन लर्निंग, फ्रंट एंड, बैक एंड, डैशबोर्डिंग, रियल टाइम एक्सपीरियंस, ये सब भी चाहिए. और जब पैसे देने की बात आती है तो हाथ खड़े कर देते हैं. अगर आपको उस लेवल का बंदा, उस लेवल का एक्सपीरियंस, उस लेवल का एक्सपर्टीज चाहिए, सो यू शुड बी रेडी टू ऑफर मनी एटलीस्ट इन द पीरियड. वो बंदा आपको करेंट से बता रहा है तो at least the guy would need 30-40%, right? That really doesn't make sense. The third harsh reality of IT job market is what I've looked for is about the ghosting. अभी ये recently मेरे observation में आया है कि HR आपके 3 राउंड ऑफ इंटरव्यू लेते हैं, 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू लेते हैं, आपसे असेसमेंट लेते हैं, आपसे कोडिंग टेस्ट लेते हैं, ठीक है? एंड एट द एंड ऑफ द इंटरव्यू राउंड उनको अगर कोई सस्ते में कोई बंदा मिल जाता है, they don't even care to call you or even give you an automated mail कि भाई we are not moving forward with your application. They just directly ghost you. No matter how much you call back them to get the feedback that you deserve to know, have you selected, have you not selected, what was the reason if possible, but at least
गिव देम द फीडबैक बिकॉज दे आर ईगर टू हियर फ्रॉम योर साइड. अगर आप किसी को फीडबैक नहीं दे रहे हो आफ्टर टेकिंग द इंटरव्यूज राउंड बिकॉज कैंडिडेट हैव पुटेड एनर्जी टाइम इनटू योर इंटरव्यूज. एक एक दो दो घंटे का आपका इंटरव्यू रहता है. कोडिंग असेसमेंट दो दो घंटे का रहता है. कैन यू नॉट स्पेंड इवन लेस देन 1 minute ऑन अ कैंडिडेट टू गिव हिम और हर फीडबैक? देयर वाज एक्सेप्शनल few HRs who was exceptionally good at their work. They had called me even with a negative feedback. They said your feedback was not positive or your application was not recommended for the next round. I got the feedback right. I understood what are the pain points that I need to work on. So what exactly topics I need to learn more to move forward with my application with the other companies. This is how it should work for, not कि तुम डायरेक्टली जाके कैंडिडेट्स को घोस्ट कर रहे हो. फोर्थ थिंग इज अबाउट अपडेटिंग देयर जॉब एप्लीकेशन. दे हैव पोस्टेड ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स. कैसा होता है कि एचआर जो होता है, तो अभी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए, वो हर जगह पे कैन एप्लीकेशन पोस्ट करता है. तो ऑलमोस्ट 90% ऑफ एप्लीकेशन जो भी आपको लिंक्डइन पे नौकरी पे दिखते हैं वो आर डेड. ठीक है, आप कोई भी जाके देख लो, अभी आपने इजी अप्लाई किया होगा, नौकरी पे अप्लाई किया होगा, आपका खुद का एक्सपीरियंस भी होगा. तो जॉब्स इफ यू अप्लाई ऑन दिस पोर्टल्स, आपको हार्डली लेस देन 5 कॉल बैक्स आएंगे. ठीक है, लेस देन 5 इज ऑल्सो मोर. आई सेड आपको इतने भी कॉल्स नहीं आते उनसे. तो there should be something that ये job application already dead हो गए. If you got a right candidate onto your team, can you please update or close the application that you have opened before so that the new candidates know that okay, this job application is already closed and they should not apply on this application. तुम खुला ही छोड़ रहे हो, कुछ अपडेट नहीं कर रहे हो. 100 लोग आके अब भर रहे हो अपना एप्लीकेशन, और ऐसा भी नहीं कि कुछ 1-2 मिनट का होता है. 10-10 पेजेस के इनके फॉर्म्स होते हैं. हर जाके भरो, लॉगिन बनाओ, अपना क्रेडेंशियल बनाओ, अपना अकाउंट बनाओ, ईमेल पे जाके वेरीफाई करो, क्या कॉन्टैक्ट अपना वेरीफाई करो, उसके बाद फॉर्म भरो, रिज्यूमे अपडेट करो. बहुत सारी चीजें होती है, एंड इट्स बिकम फ्रस्ट्रेटिंग टू कैंडिडेट्स. Then the last thing I'll talk about is on the mental health. In the last 2 months, I was questioning me, my skills, and did I make a right option of choosing IT? There are a lot of influencers, YouTubers, LinkedIners who are posting something new. They're given the new roadmap. I mean, there is nothing bad about that, but I was keeping up to the market, what they're looking for, what language they're looking for, और क्या क्या चाहिए इस मार्केट को, इस स्किल को, ताकि मैं उसको अपस्किल कर सकूं और वो मेरे को जॉब मिल जाए, मैं इंटरव्यू क्रैक कर सकूं. पर ये सब कोप अप करने में बहुत टाइम लगता है, एंड यू कैन नॉट डायरेक्टली कॉम्पीट विद अ पर्सन इसने ऑलरेडी डेटा इंजीनियरिंग पे स्पेसिफिक टूल पे काम किया है. ठीक है, आप अपस्किल करते हो फ्रॉम द ग्राउंड, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. पर जिसको हैंड्स ऑन है उसका लेवल ऑफ एक्सपर्टीज तो अलग ही होगा. ठीक है, तो जस्ट रोड मैप या फिर थियोरी पढ़ के तो कुछ होगा नहीं. थियोरी तो सबको पता है, और अभी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस सिनारियो बेस्ड चले गए. जो सिनारियो रखते हैं, कैसा ऐसा सिनारियो है, हाउ वी विल डिजाइन द आर्किटेक्चर वगैरह चीजें. हमें बहुत सारे चीजें सीखने पड़ रही है, एंड हमें अप टू द मार्क रखना पड़ रहा है. हमको खुद से हैंड्स ऑन करने पड़ रहा है, हमसे प्रोजेक्ट भी करने पड़ रहा है. ठीक है, दैट्स द हार्श रियलिटी, एंड वी नीड टू एक्सेप्ट दैट, वी नीड टू मूव ऑन. पर अभी कैसा होता है ना कि बहुत सारे इंटरव्यू देने के बाद ये सब अभी जो 5-6 चीजें आपसे बोली है मैंने, ठीक है, कि घोस्ट करना, रिप्लाई नहीं करने का, आप कॉल कर रहे हो तो रिप्लाई नहीं करने का, इंटरव्यू जस्ट फॉर सेक ऑफ इंटरव्यू लेना है तो इंटरव्यू लेने का कैंडिडेट्स का, और बाद में मना भी नहीं करने का. ठीक है, ये सब चीजों के बीच में कैंडिडेट्स बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, और मेंटल हेल्थ उसकी बहुत डाउनग्रेड हो जाती है. एंड इट्स वेरी ट्रू, आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ. विथ 5 years of experience, things would have been easy for me, पर मेरे लिए इतनी बुरी है तो I cannot even think about the people who are freshers, and I'll try my best to help those people. I'll just put a one request to all HR watching this video. Can we make a subtle change in the process that we have? Can we make sure that candidates get heard? Can we make sure that you at least give a automated feedback to them so they'll get to know what exactly they need to prepare for? Okay, if they call back you, please say that this job application is closed, and whatever the feedback that you have, please open about it, because as a candidate we are happy to hear what feedback that you have for me, so we can experience that, we can learn, we can relearn the part that we missed about it, we can go and learn the coding part which we missed in this interview. ये चीज बहुत छोटी है आपके लिए, हमारे लिए बहुत छोटी होंगी, पर ये जॉब सीकर जो होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी है, and it will really help them.
And if possible, please share this video to HRs, other colleagues, or the job seeker who are looking for a job.